बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला की वीडियो को। इसको हम 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला क्या अनास्टोमोसिस हो रहा है एंड ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मेन आर्टरीज कौन सी हैं जो अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला करवा रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सबक्लेवियन आर्टरी एंड आफ्टर दैट आफ्टर पासिंग थ्रू द scalenus anterior muscle it continues as the axillary artery. Subclavian artery has 3 parts, first, second and third, and axillary artery also has 3 parts, first, second and third. At the lower border of teres major muscle, this axillary artery continues as the brachial artery. Talking about the anastomosis around body of scapula, we have 3 main arteries, and around acromion process we have 3 main arteries. First we have the thyrocervical trunk, which arises from the first part of the subclavian artery. It gives off 2 branches. A suprascapular artery which passes through the suprascapular notch. This one is suprascapular notch and this one is suprascapular artery. And the second branch of the thyrocervical trunk is transverse cervical artery. Transverse cervical artery then divided into superficial branch and the deep branch. The deep branch is involved in the anastomosis around scapula. So number 1, we have the suprascapular artery and a deep branch of the transverse cervical artery. Both these are the branches of the thyrocervical trunk. उसके बाद हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पोर्शन होता है जिसमें से हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है सबस्कैपुलर आर्टरी, एक होती है हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज हैं वो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द अनास्टोमोसिस करती हैं। तो हमारे पास जो सबस्कैपुलर आर्टरी होती है, जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है, वो हमारे पास ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो बॉडी ऑफ स्कैपुला के इर्द गिर्द अनास्टोमोसिस करती है। तो हमारे पास 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हुई? डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, this one is the deep branch of transverse cervical artery, suprascapular artery, this one is the suprascapular artery, and circumflex scapular artery. Circumflex scapular artery, which is the branch of subscapular artery, and it arises from the third part of the axillary artery. In addition to these 3 arteries, we have the intercostal arteries. So here we have the anastomosis of first part of the subclavian artery and third part of the axillary artery. Now talking about the acromion process, we have 3 main arteries which are the suprascapular artery, thoracoacromial artery, and the posterior circumflex humeral artery. These branches give off the acromion branches. First we have the suprascapular artery. This one is suprascapular artery which arises from thyrocervical trunk, and this one is the acromion branch of the suprascapular artery. Second, we have the thoracoacromial artery, which has 4 main branches and 1 branch is acromion branch. Third, we have the posterior circumflex humeral artery, which give off acromion branch to the acromion process. So we have the 3 arteries, suprascapular artery, thoracoacromial artery, and posterior circumflex humeral artery, and these are the acromion branches of these arteries.